Hello friends, today we would like to think about the next point. It is, you can see that moving charge and magnetism part 9. Obviously this part you know that very well, very important for us because you know that very well. It is the part of Ampere circuital law. In the last lecture, that means in part 8, we discussed Ampere circuital law and its application. What about or what happened in Ampere circuital law? You know that very well, line integration of magnetic field over any closed path is always equal to product of mu naught permittivity of space, and you know that very well, total current enclosed by that loop. And in the last part we also applied concept of Ampere circuital law to obtain magnetic field due to very long wire and the solenoid. You know that very well. What is the solenoid? Solenoid is a helical coil. Helical coil of closely wound turns of insulated conducting wire. You can see this is solenoid. Today we would like to move in, we can say, the forward direction in one more step. And today we would like to think about the toroidal ring. It is also called toroid. So friends, without wasting time, we'll start. Today we'll cover this theory and then we'll discuss most time in numericals based on this solenoid and toroidal ring and some JEE+NEET concept. So be concentration, and you can see that I have adopted one method, new method to improve the sound quality of the video lecturing. In my 18 or I can say that 20 years educational journey, I have never adopted this type of method, but you know that very well. We have to think about, we can say, the time, and whatever the time or situation, we have to think about that situation. So as far as we can say the situation demand, we have obtained this method to improvise the sound quality. So just friends, concentration required. It is the toroidal ring. We would like to discuss the new topic, toroidal ring, very IMP for 2 marks theory. So it is very important for us. So what happened in toroidal ring? Just concentration. You can see this is your solenoid. Solenoid, that means a helical coil. Helical coil of closely wound turns of insulated conducting wire. So you can see this is helical coil. It is already wound, we can say that on proper base. This is called the solenoid. You know that very well. There are two types of solenoid: long solenoid and short solenoid. So this is long solenoid. Whenever the length of solenoid is very large, length of solenoid is very large as compared to radius, then it is called very long solenoid. So friends, just in front of you there is a long solenoid, and if you bend this long solenoid in the form of circular shape, like you can see this one, ये दोनों एंड्स को पकड़ो और you can see that circular form में join कर दो, you can see. So this long solenoid is bent into the form of circle or circular shape. Then whatever the structure is obtained, it is called toroidal ring. This is your toroidal ring. Its shape, if you think about the shape of toroid, it is look like a mendu vada, donut. You know that South Indian recipe donut, mendu vada जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जैसा shape है. How can you build up this type of toroidal ring? We can also think about the structure of toroidal ring. If you have, we can say the tire of scooter like Bajaj Super. पहले के टाइम पे Bajaj Super का वेस्पा आता था और स्कूटर आता था, उसका टायर है, उसमें से ट्यूब निकालो, ट्यूब को हवा भर के फ्लैट कंडीशन में ला दें, फ्लैटेड कंडीशन, और उसके ऊपर, वो ट्यूब के ऊपर जो हवा भरी ट्यूब है उसके ऊपर अगर ऐसा इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर बाउंड करो तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एग्जैक्ट टोरॉइडल रिंग जैसा बनेगा. What is the use of toroidal ring? Same story. It is useful to produce uniform magnetic field. Very important point. Solenoid की comparison में toroidal ring का use भी होता है. ज़्यादातर confinement, uniform magnetic field का confinement चाहिए तब. कल मैंने बताया था solenoid एक switching action में भी use होता है, और मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि solenoid का use कहाँ पे होता है, तो अपन लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. Don't worry. But first of all, our aim to obtain the magnetic field, formula for the magnetic field inside the toroid. So this is your toroidal ring. You can see this type of wire is wound here.
I am representing again. This is, you can see that insulated conducting wire, very closely we can say that turns, current passing through any one side, and now this is the current carrying loop. If you pass current, then magnetic field is produced. So we would like to find magnetic field at this point P. You can see point P already lies inside the toroidal ring, outside of the toroid, and you can see that inside this region, that means inside, that means inner region of solenoid, there is zero magnetic field, because magnetic field only inside the solenoid. So we would like to find intensity of magnetic field at this point P. This is called inner radius R1, this is called outer radius, and point P radius is called Rm, that means the mean radius, average radius of R1 and R2. So now we would like to think about I can say Ampere circuital law. So by using Ampere circuital law, I would like to obtain intensity of magnetic field. So you know that very well, Ampere circuital law. If you would like to apply Ampere circuital law, then your basic target, what is your first application point? We have to consider Ampere circuital loop. So first of all, Ampere circuital loop. So you can see by considering point O as a center, and if you draw this type of loop, this is, you can see that Amperian loop. So we have considered this type of circular path of radius Rm as an Amperian loop. This is your Amperian loop. Once we have idea about or consideration of Amperian loop, your next target to apply Ampere circuital law. So we start. As per Ampere circuital law, you know that this is the short form of circuital law. What is the Ampere circuital law? B dot dl is equal to mu naught sigma I. This is your equation number 1. And you know that very well, after application of Ampere circuital law, you have to think about, first of all, line integration of magnetic field. So we start with the first point, the line integration of magnetic field, P dot dl. So if you remove this dot product, so B dl cos theta, you know that very well, this is your Amperian loop. On this Amperian loop, if you consider very small element dl, and if you think about magnetic field, then magnetic field also in the same direction of dl. This is your dl, this is your magnetic field. So here, very easy, cos theta is equal to cos 0 is equal to 1. Why? Because B and dl both are in same direction. So ultimately we can write B dl. And check any point along this circular path or Ampere circuital loop. Not only point P, you can consider any point. If you consider any point along the circumference of this Amperian loop, what is the intensity of magnetic field at this point? Obviously remains constant. Why? Because these all points are at equal distance from the center. So we'll write next point here, B remains constant. So integration of B dot dl, B already out of integration dl. You can see that B. What do we mean by integration of dl? It is L. What is the meaning of L? It is called simply length of Amperian loop. So tell me the structure or nature of Amperian loop. Here whatever the Amperian loop we have considered, it is already circular. So I can write B into 2 pi Rm. Rm is the simply the mean radius or radius of this Amperian loop. So this is your B dot dl. Very easy. Now next target to find sigma I, you know that. What is the meaning of sigma I? The total current enclosed by Amperian loop. Now sigma I is equal to total current is enclosed by Amperian loop. You can say this is your target. So this is your Amperian loop. First of all, tell me how many number of terms enclosed by this Amperian loop. तो obviously डायग्राम के ऊपर से फिक्स है, सभी टर्म्स ऑलरेडी सभी के सभी टर्म्स ये लूप कवर करती है. तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स के रिलेटेड जाए तो अपन लोग तो जानते हैं लेट
number of turns per unit length, it is suppose small n. Number of turns per unit length small n, so therefore number of turns per, what is the length of this empyrean loop? Obviously 2 pi rm. So per 2 pi rm length is equal to, suppose capital N. So capital N is equal to n into 2 pi rn. Sorry, rm. There is a mistake, not n but m. So these are the total number of turns. You can see the total number of turns enclosed by this empyrean loop. अब एक टन में से I जितना करंट पास हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एंक्लोज हो रहे हैं, कैपिटल N. सो ऑब्वियसली राइट द टोटल करंट is passing through capital N number of turns. Obviously it is Ni. So in short I can write sigma I is equal to Ni. You can see, but N already with us. We'll set up the value in equation number 1. So from equation number 1, B dot df, already we have found B dot df, B into 2 pi rm is equal to mu naught. What do you mean by sigma? It is already we have found n into capital I. So B into 2 pi rm mu naught. What is your capital N? It is small n into 2 pi rm into I. So 2 pi rm cancel. So intensity of magnetic field is given by equation mu naught Ni. Most IMP formula. This is, you can see that the धूम formula for this theory. तो कोई बोले ये तो बिल्कुल सोलेनोइड, तो सोलेनोइड ही है ये. सोलेनोइड का ये सर्कुलर फॉर्म है, इसके लिए इसका आंसर भी वही जाएगा. मगर ये दोनों इक्वेशन में एक डिफरेंस है. Whenever you are dealing with solenoid, then intensity of magnetic field inside the solenoid is mu naught Ni. Similarly, whenever you are dealing with toroidal ring, then also intensity same, mu naught Ni. But friends, what is the basic problem? Whenever you are dealing with solenoid, then small n, that means the number of turns per unit length. तो इधर formula solenoid के लिए, if you are considering formula of solenoid, then it is, you can see this formula n is equal to, here number of turns is equal to n upon L. You can see n upon L. That means the total number of turns upon length. But whenever you are dealing with toroid, then number of turns per unit length, that means total number of turns upon total length, that means 2 pi rm. तो इतना डिफरेंस होगा. सोलेनोइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होगा n upon L. While you are dealing with toroid, then number of turns it is capital N upon 2 pi rm. So इतना डिफरेंस, बाकी दोनों फॉर्मूले सेम. बोर्ड में ये थ्योरी 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइडल रिंग. And you know that very well, this toroidal ring is very useful, particularly to produce uniform magnetic field. यहाँ से थोड़े दूर गांधीनगर में अपन लोग डिस्कस करें, तो गांधीनगर से थोड़े दूर एक गांव है भाट. वहाँ पे एक बहुत ही सुप्रीम इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च. वो प्लाज्मा रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म है IPR. काफी स्टूडेंट्स जानते होंगे. अगर IPR में आपको जाने का मौका मिले, तो वहाँ पे प्लाज्मा कन्फाइन करके एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस चल रहा है. उसके लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और इसलिए बहुत बड़ी जायंट टोरॉइडल रिंग एक चैनल के तौर पे रखी है, और वो चैनल थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइन करने का प्रोसेस चल रहा है. सो अगर आपको मौका मिले तो देखना, वहाँ पे बहुत बड़ी टोरॉइडल रिंग है. सो मोस्ट IMP, दिस इज, यू कैन सी दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन we have discussed, and it is very useful, particularly for, we can say that, board point of view also. So friends, this is your Ampere circuital law. Whenever you are dealing with word like Ampere circuital law, then there are, you can see that 3 theories very IMP. Number one, obtain the formula of magnetic field using, we can say that, using Ampere circuital law. It is magnetic field due to very long current carrying wire. After that, we have to think about magnetic field due to very long solenoid, and then we have to think about magnetic field due to, we can say that, toroidal ring. So these all points are very IMP for us. But wire
illustration 4.8, then solenoid and then toroid. तो तीन थियरीज, दमदार थियरीज एम्पियर सर्किट लॉ के लिए कर ही देने का, तीन में से कोई भी एक थ्योरी बोर्ड में के आने के पूरे चांस। अब फ्रेंड्स हमने थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब अपन लोग यहाँ से लेकर लेक्चर के एंड तक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिसे कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टोरॉइड आपके सामने है, तो पहले टोरॉइड रिलेटेड न्यूमेरिकल को ही कवर कर लेते हैं। सो दिस इज योर टोरॉइडल रिंग एंड नाउ we would like to think about one numerical, first of all NCERT, and then we will think about out of textbook, that means JEE+NEET. So part 9, now we know that, so we can remove it. Okay friends, so be ready for it. You can see very important numerical we would like to discuss. There is a toroidal ring is given, its inner radius given R1, outer radius given R2. Here what is the most important point? Your target to find intensity of magnetic field inside the toroid. So start. So magnetic field inside a toroidal ring. What is the magnetic field inside the toroidal ring? Recently we have discussed. It is mu naught n into I. You know that. अगर ये n चिकना कैसे? What do you mean by n? So n that means simply number of turns per unit length. This is your n. So n का मतलब होगा total number of turns. जिसको ना पता चले उसके लिए स्टेप है, बाकी डायरेक्ट लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर टोटल लेंथ। सो हियर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस टोरॉइडल रिंग? इट इज 2 pi rm by formula इधर। सो इट इज circumference 2 pi rm. Don't forget rm is not given here, r1 and r2 given, so that means we can easily find rm. So we start with the rm, where Rm is equal to the mean radius of toroidal ring. Mean radius of toroidal ring. So what is the Rm? So Rm is equal to, I can write R1 plus R2 divided by 2. R1 plus R2 divided by 2 average. R1 here I think given, it is, you can see that 25, and R2 also given 26. Multiplied by 10 raised to minus 2 because of centimeter to meter divided by 2. So obviously Rm 25.5 meter or into 10 raised to minus 2 meter. This is your mean radius. तो mean radius की वैल्यू इधर रख के अपन लोग number of turns फाइंड कर सकते हैं. So it is, you can see the number of turns. इसको अपन लोग थोड़ी देर के लिए मीटर में से पर्टिकुलर फॉर्म में ला दे तो 0.25 मीटर. चलो. Now we would like to find formula for, you can see that n मिले क्योंकि rm की वैल्यू इधर n मिले, मतलब इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से फाइनल आंसर. So now we would like to find, you can see from equation number 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो b is equal to mu naught instead of n. Now I can put value n upon 2 pi rm. So n upon 2 pi rm multiply by I. You can see that I. Ready? So this is your final point, but Rm already we found, no problem at all. So B mu naught, it is 4 pi into 10 raised to minus 7. And now we have to think about next point. Next point you can see here, just a minute. Okay, number of turns, capital N already given 3500, 2 pi 3.14, Rm already we have found 0.25. Current passing through this toroidal ring also given, it is, you can see that 11 ampere. So if you set up these all values and simplify, you will get answer 3 into 10 raised to minus 2 Tesla, and this is the answer of this numerical. This is very interesting numerical, and this is your answer number 4.17. And as per my experience and as my point of view,
I can say this is the ideal numerical for board exam for 3 marks. So most IMP, the धूम we can say that numerical particularly for board point of view, board में ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए आइडियल, तो ये सॉल्यूशन इसका इसी अंदाज में लिखना है मोस्ट IMP. So one numerical based on toroidal ring. Now we discuss few numericals based on solenoid. तो सबसे पहले जिसे कह सकते हैं कि solenoid related टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं, फिर आउट ऑफ टेक्स्ट बुक. So concentration required, very interesting lecture, no doubt about it. और ये चैप्टर का ये सबसे इंटरेस्टिंग जोन ही है, नो डाउट. इसके बाद भी बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, मगर ये ज़्यादातर जेडबल नीट को अफेक्ट करने वाला सेक्शन कम है, क्योंकि जेडबल नीट के लिए मैंने बताया वायर और लूप वो धूम मचाते हैं. तो फ्रेंड्स अब एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. Suppose this type of solenoid is shown in this diagram. Solenoid, that means a helical coil of closely wound turns. I amount of current is passed through it. Because of I amount of current, you know that very well magnetic field is produced, and this is the direction of magnetic field, and you know that very well, particularly for solenoid, inside the solenoid, what is the nature of magnetic field? Obviously uniform, so I have represented parallel magnetic field lines. Now few important data. Here your target to find magnetic field inside the solenoid, don't worry again. So magnetic field inside solenoid. So tell me, or along the solenoid here. So what is the magnetic field inside the solenoid? Once again mu naught Ni. You know that very well, mu naught Ni. But what do you mean by N? सबसे चिकना केस. So here N, that means number of turns per unit length. So number of turns per unit length, that means the total number of turns upon total length. Here L is the length of solenoid. You can see N upon L. So here L is given, and here number of turns के लो चाहिए. Number of turns के लिए क्या है डेटा देखो. There are, you can see that few layers. How many number of layers given here? The number of layers given 5. ऐसे 5 लेयर्स दिए, 1 2 3 1 2 3, और हर एक लेयर्स में 400 टर्न्स है. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? Number of layers 5. Each layer possess 400 tons. So how many number of total tons? Obviously 2000. तो अपन लोग कैपिटल N फाइंड करते हैं. Here total number of tons is equal to 400 multiplied by 5. Why? You know that very well. Per layer 400 tons. So there are 5 number of layers. So total आएगा 2000 number of tons. Okay. Length already given 8. No doubt about it. So here N is equal to 2000 upon 8 meter. This is your, we can say that small n. We'll use this small n equation number 1. So we'll write here from equation number 1, the intensity of magnetic field mu naught. You have idea about mu naught, 4 pi into 10 raised to minus 7. N already we have found. N, any capital N upon N. It is, you can see that 2008. For 2000 divided by 8, current already given here, you can see 8 ampere, no doubt about it. So final answer here, B is equal to 2.5 into 10 raised to minus 2 Tesla. This is the magnetic field inside this very long solenoid. Very easy numerical. The little bit typical condition here given to make confuse, or we can say that to make confuse the students. That's why the number of layers given, don't worry. This is your unsolved number 4.8. Very easy for 2 marks point of view. 3 marks में पूछने के chances बहुत कम, और अगर आप lucky हो तो very good. So you can see this is your unsolved number 4.8. Now we'll deal once again one more important point. You have to think about one numerical in the form of homework. It is 4.15. So you have to try to solve 4.15 as homework. And now one more most timely numerical. अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाला है फॉर 3 मार्क्स. सो बी अलर्ट. सो वी डिस्कस वन मोर वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल. डोंट फॉरगेट, दिस इज वेरी वेरी IMP. And then we start JEE NEET shortcuts and then some numericals out of textbook. So friend,
there is a solenoid. You can see this is solenoid. On passing current through this solenoid, obviously magnetic field is produced. This is, you can see the direction of magnetic field. Suppose this is magnetic field, don't forget. Now inside this magnetic field or inside this solenoid there is a wire. ये देखो वायर है, इसमें बता रहा हूँ, चेक करना बराबर. This is, you can see that wire. मैं बोले क्या ड्रॉ कर रहे हो, जरा देखो, मैं बता रहा हूँ. This is, you can see black color representing wire and it is connected with a battery. अब ये वायर को मैंने ऐसे रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल, लाइक इन दिस वे. दिस इज नॉट लाइक दिस वन. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर, वायर ऐसे. वापस मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं, अपने को ऐसे देखना. मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, वायर ऐसे. तो ये मैं जिसे कह सकते हो वायर ऐसे ड्रॉ किया है 3D में. अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता, ये देखो ये वायर, तो भी समझ में आ जाता है ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड है. चेक इट. सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यू कैन सी. मगर दे बोथ आर, यू कैन सी दैट इन वन प्लेन, यानी ऐसे नहीं, ऐसे प्लेन में. दिस इज, यू कैन सी दैट योर वायर एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, लाइक इन दिस वे. अंडरस्टैंड नॉट? दिस इज योर प्लेन, ये वायर है और ये मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो मैंने इसको 3D में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. ये वायर है like this one, और मैग्नेटिक फील्ड है वो मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ. दिस इज, यू कैन सी दैट मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होगा इधर. यू कैन सी दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड नॉट? दिस इज, यू कैन सी दैट द सिचुएशन. ऑब्वियसली दिस ब्लैक कलर वायर already placed inside the solenoid and already inside the solenoid you know that magnetic field. तो अपन लोग ऐसा कह सकते हैं, जो वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. कैसे रखा है? वायर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी कि बिल्कुल ऐसे, यानी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बट इफ यू चेक द डायग्राम वेरी केयरफुली then you can see this wire already in contact with battery. Because of battery, what happened? Obviously current flows through the wire. So now this is not an ordinary wire, but it is a current carrying wire, you can see. So current passing through this wire is IW, W for wire. What is the current passing through this wire? IW. And I is the current passing through solenoid. Solenoid में से जो current pass हो रहा है वो जिसे कह सकते हैं कि I है. Don't worry. So I is the current passing through solenoid. Solenoid में से current pass करेंगे इसलिए magnetic field produce होगा. और IW representing current passing through wire. अब question क्या है? Your target to find, you can see that what should be the current we have to flow. ये जो वायर हमने रखा है सोलेनोइड के अंदर, ये ना ये वायर ऐसे रखा है, ये वायर ऐसे, इसमें से कितना करंट पास किया जाए बैटरी थ्रू, कितना करंट पास करे तो वायर है वो वहां का वहीं रहेगा, सोलेनोइड के अंदर ऐसा लटकता रहेगा, नीचे नहीं गिर जाएगा. तो अपन लोग तो जानते हैं कि कोई भी वायर, याद करो पार्ट 2, पहले मैं पार्ट 1 को याद दिलाता हूँ. एनी चार्ज्ड पार्टिकल पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v, then magnetic force acting on it q into v cross b, part 1. But any current carrying wire of length l is placed in uniform magnetic field, then whatever the force acting on it, anybody, what is the force acting on current carrying wire of length l placed in magnetic field b? It is IL cross b. तो ये वायर है देखो ऐसे रखा है आपके सामने ऐसे, बराबर. मैं एक्चुअली बता रहा हूँ ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. तो ये वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उसमें से करंट पास कर ले, देखने से करंट कैरिंग वायर हो गया. तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स का मैंने आपको दिया था, ऐसे यूं गन निकालो और ये फोड़ो ऐसे. तो F फोर्स, B करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट है. तो इधर देखो अपना जो कंडीशन है वो ऐसे है. देखो वायर को सपोज मैं ऐसे रखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स जिसे कह सकते हो ऊपर लगेगा. इन शॉर्ट जिसे कह सकते हैं कि फोर्स जो लग रहा है वो है ऊपर की डायरेक्शन में. दिस इज मैग्नेटिक फोर्स Fm. रेडी? सो नाउ वंस अगेन व्हाट इज द स्टोरी, जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. यू कैन सी लाइक इन दिस वे. देखो ऐसे अपन लोग वायर है
if the magnetic field or wire एक दूसरे को perpendicular, force simply we can say that experienced by this wire it is already in upward direction. तो अब इसको इक्विलिब्रियम में रखना हो तो ये कंडीशन मैंने आपको सिखाई है. In which circumstances this wire remains in equilibrium inside the solenoid. Obviously this force Fm is balanced by force due to weight. तो अपने जो न्यूमेरिकल का थीम है वो है Fm is equal to mg. और ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं BIL. तो शुरू करते सबसे पहले अपन लोग शुरू करते हैं हियर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में डेटा देख लेता हूँ. उसमें करंट आई दिया है, A to Z दिया है, डोंट वरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू magnetic field of solenoid is given as, what is the magnetic force? It is Fm, so it is BIL sin theta. So here Fm it is BIL. reason अपन लोग जानते हैं both are perpendicular, so theta 90 sin 91. so this is the force acting. मगर मैंने बोला दोस्तों ये न्यूमेरिकल बहुत ही चिकना केस है. ये I का मतलब है करंट पासिंग थ्रू वायर. दिस इज द करंट कैरिंग वायर. सो वी हैव टू सेट अप हियर IW. you can see that IW. what do you mean by IW? here IW that means current passing through wire. you can see ये जो वायर में से करंट पास हो रहा है वो. ready? So now we have to think about the next point BIWL. next point अपना जो condition है, so to make as per given situation or condition, to make wire, to keep wire in equilibrium, obviously which condition we have to satisfy? Fm is equal to mg. this force is balanced by mg, or force due to weight is balanced by Fm. but Fm is equal to, you know that very well, but Fm is equal to BIWL is equal to mg. चलो IW your target. अपने को यही फाइंड करना है इस वायर में से कितना करंट पास किया जाए तो ये वायर बैलेंस कंडीशन में रहे. तो IW अपना टारगेट है. लेंथ ऑलरेडी गिवन, M you know that, G you know that, मैग्नेटिक फील्ड के वांदे है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो हियर B that means magnetic field inside the solenoid. so what is the formula? magnetic field inside solenoid mu naught Ni. अब इस n का मतलब तो आप जानते हो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो अपन लोग लिखते डायरेक्टली mu naught N upon L into I. this is your magnetic field, mu naught Ni upon L. तो अब ये वैल्यू इधर रख दे. this is your equation number 1. so I will write from equation number 1 B. instead of B I can put mu naught Ni by L. mu naught Ni by L multiplied by IW into L mg. you can see बहुत ही चिकना केस. इधर कैपिटल L रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, हियर स्मॉल l रिप्रेजेंट लेंथ ऑफ वायर, I represent current passing through solenoid, IW represent current passing through wire. that's why we have used subscript W, and this is your target of IW. तो अब इसमें फ्रेंड I को सब्जेक्ट फॉर्म में लाए, then we can easily find, this is your target to find current passing through solenoid. there is a mistake. so what amount of current we have to pass through solenoid such that this wire remains in equilibrium? so no problem, this is not your target, but there is, we can say that one correction. your target to find current passing through solenoid. solenoid में से कितना करंट पास किया जाए लाइक I, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो भी वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करे, और वो फोर्स उसके वेट को, जो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसको बैलेंस कर दे. तो अपन लोग का मेन टारगेट है I फाइंड करना. so we would like to find I. so I should be required in the form of subject. so it is mg capital L
अपॉन म्यू नॉट n आई डब्ल्यू इंटू स्मॉल n। देखो तो अब इसमें सभी वैल्यूज दी है, सो मैं वैल्यूज भी रखता हूँ ताकि आपको परफेक्ट न्यूमेरिकल हो जाए। मास गिवन 2.5 ग्राम, सो 2.5 इंटू 10⁻³ kg, g की वैल्यू 9.8, कैपिटल L already if you read the data then here 60 already given upon mu naught यानी 4 pi into 10⁻⁻7, total number of turns given 900, current passing through wire given 6 ampere or length given 2 meter, you can see that of wire, so if you simplify then your answer would be 108.36 ampere। तो इतना करंट इस सोलेनोइड में से पास किया जाए तो ये वायर बैलेंस कंडीशन में रहेगा। मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल फॉर 3 मार्क्स and this is your unsolved number 4.26 NCERT, very IMP numerical। Once again we will revise। You can see there is a solenoid, inside this solenoid a wire is placed and current is passing through this wire because of this battery। प्रॉब्लम क्या है, इसमें से करंट पास होगा तो ये वायर है वो करंट कैरिंग वायर हो जाए, मगर अपने को इस वायर को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इक्विलिब्रियम में रखना हो तो कोई भी करंट कैरिंग वायर को इक्विलिब्रियम में रखना हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस तरह अप्लाई किया जाए तो इक्विलिब्रियम में रहे। सपोज ये वायर है तो उसके मास के कारण वो नीचे चले जाएगा, इसको यहाँ ही रखना है, तो इसको यहाँ रखना हो तो ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़े, इधर एक फोर्स लग सकता है। अगर ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी लेंथ L है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे तो हो जाए, तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, मगर उसके लिए हमें सोलेनोइड में से करंट पास करना पड़े। यही हमारा क्वेश्चन है, what amount of current we have to pass through this solenoid such that whatever the magnetic field is produced, because of this magnetic field this current carrying wire experience some magnetic force and this magnetic force can balance the force due to weight। कहानी पता चला कितना सोलेनोइड में से करंट पास किया जाए ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सोलेनोइड के अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फोर्स का एक्सपीरियंस करे और वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो अपना वेट को बैलेंस कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस करंट कैरिंग वायर, CUR मतलब करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज गिवन एज Fm is equal to BIWL sin theta। IW that means current passing through wire, theta 90, BIWL, okay, IWL given, B is the magnetic field, but as per given condition, what's the condition? To keep wire in equilibrium this force is balanced by mg और mg is balanced by Fm। Fm का formula BIWL, B का मतलब है magnetic field produced inside the solenoid, it is mu naught Ni, n अपना चिकना केस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, तो b मिल गया। b की वैल्यू अपन लोग इधर रखेंगे, इसमें से i अपना टारगेट है, इसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाए आंसर। मस्त क्वेश्चन है। सोलेनोइड रिलेटेड और टोरॉइड रिलेटेड 4 न्यूमेरिकल्स याद रखने के, 4.8, 4.15, 4.26 एंड 4.17। इसमें से मुझे 4.26 और 4.17 बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, so be alert about it। Now friends, we'll start, we can say that some JEE+NEET concept, but first of all analyze। Okay, now we'll write few, we can say that shortcuts, and then we'll apply these shortcuts to solve very important question। तो सोलेनोइड और टोरॉइड रिलेटेड JEE+NEET में क्वेश्चन पूछते, मगर जितनी जिसे कह सकते फ्रीक्वेंसी लूप और वायर की है उतनी नहीं। तो लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट टू लास्ट लेक्चर पार्ट 7 में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, एक आर्क रिलेटेड और दोनों आर्क रिलेटेड थे, वो आपने ट्राई किया होगा, वरना अपन लोग क्लास में सॉल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। सो JEE+NEET, very important। First of all we will discuss for finite length solenoid। You know that there are 2 types of solenoids, very long solenoid, infinite length solenoid, and short solenoid, that means the finite length solenoid। So first of all we would like to discuss finite length solenoid। So finite length solenoid को अपन लोग
शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे FLS, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड. सो इन दिस डायग्राम you can see finite length solenoid is already I have represented. This is finite length solenoid. This is called axis of solenoid. The length of solenoid is L, and what is the radius of solenoid? It is small a. So finite length solenoid. So I would like to find intensity of magnetic field at this point P. So these two ends you can see subtend some angle at this point P. And whatever the angles are subtended, it is alpha 1 and alpha 2. Just check it. Alpha 1 and alpha 2. Okay. So what is the formula for this magnetic field? So whatever the magnetic field is produced because of finite length, it is given by this equation mu naught small ni by 2 sine alpha 1 plus sine alpha 2. This is the most IMP formula for magnetic field. You can see that very IMP. Mu naught ni by 2 sin alpha 1 plus sin alpha 2. टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ नहीं है, सब JEE नीट शॉर्टकट मोस्ट IMP. Alpha 1 and alpha 2 are the angles subtended by this end at this given point. अब इसके और एक दो केसेस बनाते हैं. सेकंड केस मोस्ट IMP. Okay, so this is you can see that now next point magnetic field at any one end of the finite length solenoid यहाँ पे. So now next point magnetic field at ये पहला केस था magnetic field inside finite length solenoid. Now magnetic field at any one end of FLS. FLS यानी finite length solenoid का कोई भी one end. These are the two ends. मुझे यहाँ पे magnetic field find करना है. Suppose this is point S. तो ऑब्वियसली पूरी कहानी देखो आप, ये चेंज हो जाएगी. मैं इधर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि पता चले. These are the two ends. You can see. पहले पॉइंट P था, अब ये पॉइंट P को शिफ्ट करके यहाँ पे रख दे. देखो दिस इज योर पॉइंट P. मगर मैंने S लिखा नो डाउट. तो ऑब्वियसली यू कैन सी दिस एंगल S और ये एंगल ऐसे हो जाएगा. ये एंड ऐसे एंगल बनाएगा और ये तो जीरो. तो ये अल्फा 2 है वो आप देखो जिसे कह सकते हैं कि टोटली चेंज हो जाएगा. अल्फा 2 है वो बन जाएगा जीरो. सो इन दिस सिचुएशन ओनली यू कैन सी दैट वन एंगल इज सिचुएटेड अल्फा 1. ये रहा अल्फा 1. अल्फा 2 तो भूल ही जाएगा. तो अपने को इसमें साइन अल्फा 1 चाहिए इन दिस ट्रायंगुलर, क्योंकि फॉर्मूला तो बेसिक यही रहेगा अल्फा 2 0 साइन अल्फा 1 योर टारगेट. सो इन दिस ट्रायंगुलर we would like to apply sin alpha 1. So what is your, we can say that length of solenoid L, radius A. तो ये जो लाइन है वो कितना होगा? What is the distance of this portion? It is under root L square plus A square. तो इधर sin alpha 1 का फॉर्मूला क्या होगा? You can see this is angle, so opposite upon hypotenuse. You can see L square plus A square. तो अब ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ B and why magnetic field at any one end of the finite length solenoid, it is mu naught Ni by 2 mu naught Ni by 2 multiply by sin alpha 1, it is L upon under root L square plus A square plus sin alpha 2 0. So in short this is your, we can say that answer. सीधा शॉर्टकट फेंकने का. You can see magnetic field at any one end, but don't forget at any one end of finite length solenoid. finite length infinite अभी नहीं है. अब इसमें तीसरा केस डिस्कस करते हैं magnetic field at midpoint of solenoid. Suppose this is midpoint, so we remove it. Magnetic field, this is third case. So now third case magnetic field at midpoint of finite length solenoid. Suppose this is finite length solenoid, this is midpoint M. I would like to obtain magnetic field at this point M. Obviously this is midpoint, so these two angles, just concentration required now, these two angles, so here obviously alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to alpha. ये midpoint हो तो दोनों एंगल सेम ही हो जाएंगे ना. So in this situation if you set up the value, so magnetic field mu naught Ni by 2 इधर sin अल्फा 1 की जगह भी अल्फा, sin अल्फा 2 की जगह भी अल्फा.
तो जिसे कह सकते हैं कि फाइनली अपन लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा और 2 साइन अल्फा और 2 कैंसल, सो फाइनली मिलेगा म्यू नॉट साइन अल्फा 1 कहूँ तो भी चले, अल्फा 2 भी चाहूँ तो भी चले। तो इसमें मुझे साइन अल्फा 1 चाहिए ये ट्रायंगुलर में। So this is midpoint, so obviously this distance L/2 or L/2, check it, L/2, L/2, that means total L। अब ये ट्रायंगुलर में ये डिस्टेंस ये है देखो। So in this triangular if you apply sine function, so what is sine alpha 1? So it is mu naught ni, instead of sine alpha 1 I can apply L/2 and what is this distance? Okay, अब थोड़ा अच्छी तरह इधर ही लिखते हैं। अपने को साइन अल्फा 1 चाहिए, तो ये ट्रायंगुलर में अल्फा 1 अप्लाई करें तो साइन अल्फा 1 यानी L/2 अपॉन अंडर रूट दिस डिस्टेंस अंडर रूट L/2 यानी L²/4 प्लस A²। चलो अब अप्लाई करते हैं। सो B इज इक्वल टू B मिड पॉइंट, सो म्यू नॉट स्मॉल ni, व्हाट इज द साइन अल्फा 1? साइन अल्फा 1 दैट मींस ऑपोजिट L/2 अपॉन अंडर रूट L²/4 प्लस A²। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करें, बी मिड म्यू नॉट ni, इधर एलसीएम ले ले तो आंसर ऐसा आएगा अंडर रूट L² प्लस 4A²। जस्ट चेक इट, ये जबरदस्त शॉर्टकट दूं तो 3 शॉर्टकट्स हमने डिराइव किया है। इट इज जनरल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, देन मिड पॉइंट एट एनी वन एंड ऑफ द FLS, finite length solenoid, and magnetic field at the midpoint. Once again there is, we can say that confusion, then we will start with the first case. In first case magnetic field at any point inside the FLS, second case magnetic field at any one end of the FLS and magnetic field at midpoint of FLS। FLS का मतलब है finite length solenoid। अब इसके ऊपर से infinite length solenoid का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं ताकि फिर अपने सभी फंडे क्लियर सोलेनॉइड के, एंड देन वी अप्लाई शॉर्टकट्स टू सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके, सो नाउ कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, यू कैन सी दैट नाउ इनफाइनाइट लेंथ की जगह कभी कभार वर्ड आएगा वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। सो डायग्राम को थोड़ा चेक करो, कौन सा डायग्राम, जो आगे का डायग्राम था वही याद करो। दिस इज योर अल्फा 1, दिस एंड सबटेंस अल्फा 2, लेंथ L, रेडियस है। अब थोड़ी देर के लिए देखो ये एंड इस साइड एक्सटेंड होने लगता है, सपोज दिस एंड इज एक्सटेंडेड इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इनफाइनाइट अगर ये एंड ऐसे भागने लगे तो व्हाट हैपन विद द अल्फा 2 कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस एंड बिकम्स 90 डिग्री। सो फॉर इनफाइनाइट length solenoid, alpha 1 is equal to alpha 2 is equal to pi/2 और 90 डिग्री। तो अपने पास तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है FLS के लिए म्यू नॉट ni/2 sin अल्फा 1 प्लस sin अल्फा 2, याद करो थोड़ी देर पहले। अब अल्फा 1 अल्फा 2 की जगह pi/2 रख दो, sin pi/2 1, sin pi/2 1, so final answer mu naught ni/2 1 plus 1, so cancel। तो याद करो यही तो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फॉर वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, जस्ट चेक इट। तो ये इसके ऊपर से आ गया। इसमें एक और केस पूछते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन एंड ऑफ द फाइनाइट लेंथ, नहीं बट इनफाइनाइट। सो नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। टोटल 5 फॉर्मूले सोलेनॉइड के दिमाग में होने चाहिए, 3 फाइनाइट लेंथ एंड 2 फाइनाइट लेंथ की जगह इनफाइनाइट लेंथ। तो देखो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड में मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एंड पॉइंट पे। तो ऑब्वियसली अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड केस ये है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड यू कैन सी। तो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के लिए अपन लोग जानते हैं कि एक जो एंड है, अब ये एंड है इधर ही रहेगा, ये एंड है सपोज एक्सटेंड होता है तो एक अल्फा 1 है वो निकल जाएगा, एक ही बचेगा जिसे कह सकते हैं एक तो 0 हो जाएगा, एक अल्फा 2 90 डिग्री, यानी कि ऐसा बनेगा देखो अल्फा 1 0 एंड अल्फा 2 pi/2, क्योंकि एक ज एंड एक्सटेंड होगा, एक ये पॉइंट को आपको इधर कंसीडर करना है। देखो ये पॉइंट भी
अब क्या होगा, ये अल्फा 1 अल्फा 2 तो 0 है, और अब ये एंड कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाए तो जिसे कह सकते हैं कि 90 डिग्री सिनेरियो पे आए, दैट मीन्स फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। चलो साइन अल्फा 1 तो 0 और साइन अल्फा 2 पाई बाई 2 1, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंड ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड इट इज म्यू नॉट NI बाई 2। सो 5 का पंच दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड because of finite length solenoid and magnetic field because of infinite length solenoid. Finite length solenoid, then three cases: general formula at any one end and at the midpoint. इसी तरह infinite length, then there are two cases: general formula at any point inside the solenoid and number two at any one end of the infinite length. तो फ्रेंड्स इतने शॉर्टकट्स याद रखने के सब JEE+NEET। और अब अपन लोग इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन आपको इधर दे रहा हूँ जो ट्राई करने की है। मैं एक ऐसा चिकना केस देने जा रहा हूँ जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स गए हुए हैं, सो बी अलर्ट अबाउट इट। सो मैं क्वेश्चन दे के फिर अपन लोग सोल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन है वो जरा देखो एंड देन विल थिंक अबाउट इट। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। दिस टाइप ऑफ सोलेनोइड इज गिवन, there are lots of number of turns। मैं डायग्राम एज पर competitive related ही पूछ रहा हूँ, don't worry। and this is any point P and this two ends subtend some angle। diagram already given in textbook, don't worry, यानी कि diagram is given in question paper, a 45 degree 45 degree। so what is the magnetic field at point P? this is your target, find magnetic field at point P and current passing through this solenoid is 5 ampere। if current passing through solenoid is 5 ampere and having 100 tons per meter, number of tons 100 tons per meter, then what is the intensity of magnetic field at this point P? Start। this is, you can see that yes, this is finite length solenoid, no doubt about it, think about it। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी ट्राई टू सॉल्व इट। मैंने बोला था अपने वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड? इट इज म्यू नॉट NI डिवाइड बाय 2 sin alpha 1 plus sin alpha 2। this is, you can see that our first shortcut। तो वेरी गुड, sin alpha 1 गिवन, sin alpha 2 गिवन, सब कुछ गिवन, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें ये एंगल लेने के थे। देखो अल्फा 1 अल्फा 2, न्यूमेरिकल में आपने इधर डायरेक्ट 45 लिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। सो हियर म्यू नॉट, दैट मींस 4 पाई into 10⁻⁻⁷। ओके, सो योर टारगेट टू ऑब्टेन आंसर इन द फॉर्म ऑफ म्यू नॉट, डोंट वरी। n already given, what do you mean by small n? number of turns per unit length 100, current already given 5, here sin 45 plus sin 45 divide by 2, so 500 divide by 2 mu naught, इसका वैल्यू होगा 2 sin 45, so 2 cancel, so 500 mu naught sin 45 1 by root 2, ultimately आंसर आएगा 500 by root 2 mu naught। this is very important numerical and this is already asked in AIMS 2011 मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो अपन लोग एक आध और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सो जस्ट अप्लाई योर लॉजिक टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ JEE सेक्शन, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। कैन आई रिमूव इट? यू कैन सी दैट वेरी इजी। तो ऐसे क्वेश्चन सोलेनोइड में पूछ सकते हैं। दिस इज, यू कैन सी दैट नाउ JEE+NEET सेक्शन। So one more, so you have to solve yourself one more question, a very long solenoid, very long solenoid,
very long solenoid has 200 tons per centimeter, 200 tons per centimeter, and carries a current I, and current passing through this solenoid is I. Next, the magnetic field at its center is 6.28 into 10 raised to minus 2 टेस्ला. चलो, कोई ऐसा सोलेनोइड है वेरी लॉन्ग जिसमें से नंबर ऑफ टर्न्स है पर सेंटीमीटर 200, करंट पास हो रहा है और उसके सेंटर में इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है. अब इसमें एक और क्वेश्चन है साथ में, another very long solenoid has number of turns 200 की जगह आ गया 100 turns per centimeter, 100 turns per centimeter, and carries current I by 3. current है I by 3 instead of I by 3 instead of 200 100 turns. ये पहला solenoid है, दूसरा solenoid. Then the magnetic field at its center is blank. Then you have to find magnetic field at its center. चलो, तो B1 दे दिया है, B2 फाइंड करना है. Think about yourself. Okay, so now we can solve it. Here B1 it is mu naught Ni. I can write N1 I1, and B2 it is mu naught N2 I2. तो अब अपन लोग इसका रेशियो ले ले B2 by B1. So mu naught कैंसल, N2 by N1, I2 by I1. चलो N2 है ऑलरेडी 100, so N2 100, N1 है 200, I2 already I by 3, and I1 already I, you can see. So B2 by B1 is equal to 0 cancel, I cancel, 3 डिनोमिनेटर में आएगा तो 3 2 जा 6, so 1 by 6. So ultimately B2 simply B1 by 6, यानी कि 6.28 into 10 raised to 2 divide by 6. और ये जो आंसर आता है वो आपका जिसे कह सकते हैं आंसर आएगा. मैं फाइनल आंसर बोल रहा हूँ. इट इज, यू कैन सी दैट 1.05 10 raised to minus 2 टेस्ला. So very easy, simple application है, no doubt about it. One more and then we'll think about. अब जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो आपको ट्राई करनी है घर पे. ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, so just concentration required. Just it because I have selected one question. Okay, so this question already we can say that asked in NEET examination, so just try to solve it. A long solenoid, this is for homework. A long solenoid, you can see long solenoid carrying a current produces a magnetic field B. Magnetic field B produce होता है along its axis. And if the current is doubled, now current is doubled, and the number of turns per centimeter is half, and number of turns per centimeter is half. Then new value of magnetic field, is blank. This is already asked in NEET 2000. You can see NEET 2003. So you have to think about this question in homework.
So friends, today we have discussed very important points about MPA circuitry law, then its application, toroid, and then JEE NCERT question. तो बेहतरीन टॉपिक बोर्ड के रिलेटेड और JEE नीट रिलेटेड भी. नेक्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो बी अलर्ट अबाउट इट. होमवर्क में आज जो चला उसे लिख देने का 2 टाइम्स. थैंक्स.